Hello and welcome back to part 2 of the series on question and answers on economics for first year BA LLB students of Mumbai University. This is the semester 1 portion. I am covering up multiple questions and answers which have come in the past papers of university, hoping that this would cover all the portions of our subject on economics. This will be once again an hour-long video covering a few questions. I have many questions to cover here. I'll be taking my time into explaining each question's answer in detail. And we can use these long question answers we can substitute it for different marks, different quantity of marks. For example, if it comes for 13, we can write longer and so on. So let's begin with the first question of the part 2. What does public debt mean? Public debt, also known as government's debt or national debt. So ये जो है ये I'll be speaking in Hindi and English. Let me know in the comment section if you just want English or Hindi or both. Mix of it. Public debt, in this video I'm trying with multi language. So public debt क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो डेट है, गवर्नमेंट की जो उधारी है या नेशन की जो उधारी है वो पब्लिक का डेट है. That is known as public debt. It refers to the total amount of money that a government owes. गवर्नमेंट पे उधारी है to external creditors and domestic lenders, जो देश के बाहर से लोगों से पैसे लिए हैं और जो देश के अंदर से पैसे लिए हैं गवर्नमेंट ने उधारी पे, उसको बोलते हैं नेशनल डेट या गवर्नमेंट डेट या पब्लिक डेट. इट रिप्रेजेंट्स द एक्यूमुलेटेड बोरोइंग्स, टोटल बोरोइंग्स कितना जमा हो गया है, बोरोइंग्स कितना कर दिया है बाय द गवर्नमेंट टू कवर बजट डेफिसिट्स. तो ये जो बोरोइंग्स क्यों किया गवर्नमेंट ने, तो अपने बजट का जो शॉर्टफॉल था उसको कवर करने के लिए. व्हेन इट्स एक्सपेंडिचर्स एक्सीड्स इट्स रेवेन्यूज, जब भी उनका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर खर्चा ज्यादा हो जाता है उनके जो रेवेन्यू सोर्सेस है उससे, तो उनको रिजॉर्ट करना पड़ता है पब्लिक डेट पे. मीन्स दे हैव टू गो टू पब्लिक टू आस्क फॉर मनी. नाउ हु इज पब्लिक? तो पब्लिक कौन है? तो वो है एक्सटर्नल क्रेडिटर्स, बाहर के लोग जिनसे उधारी पे पैसे लिए, और डोमेस्टिक लेंडर्स जो देश के अंदर के लोग हैं जिनसे इन्होंने पैसे लिए. बैंक्स हो सकते हैं, आरबीआई हो सकता है, और भी बहुत सारे सोर्सेज है, पब्लिक हो सकती है. अभी हम लोग इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं पब्लिक डेट का. मेन की एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक डेट. गवर्नमेंट बोरोइंग, ऑफ कोर्स पब्लिक डेट मीन्स गवर्नमेंट ने बोरो किया है. तो पब्लिक डेट अराइजेस व्हेन अ गवर्नमेंट बोरोज फंड्स टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज. अभी ये ऑपरेशंस जो है, प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज जो है वो बजट से आते हैं. तो बजट में जब डेफिसिट होता है तो दे हैव टू रिजॉर्ट टू पब्लिक डेट और गवर्नमेंट डेट. तो देन दे हैव टू बोरो फंड्स फ्रॉम एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक लेंडर्स, एक्सटर्नल सोर्सेज एंड डोमेस्टिक लेंडर्स. दिस बोरोइंग कैन अकर थ्रू इशूइंग बॉन्ड्स. अभी ये जो लोन हम लोग जो बोरोइंग्स करते हैं तो वो किस किस सोर्सेज से होता है? वो होता है बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, 10 साल के, 5 साल के, जो भी हो, बॉन्ड्स इश्यू करते हैं. आरबीआई करता है बॉन्ड्स इश्यू. बहुत सारी कंपनीज भी बॉन्ड्स इश्यू करके पैसे खड़ा करती है. लोन्स और अदर फॉर्म्स ऑफ डेट सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज. तो इस सोर्सेज से गवर्नमेंट अपने बोरोइंग्स का
बोरोइंग्स को रेज करती है. टू टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट आते हैं. वन इज एक्सटर्नल एंड वन इज डोमेस्टिक डेट. ये हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ लिया था. एक्सटर्नल डेट क्या होता है? तो इट इज मनी ओड टू फॉरेन गवर्नमेंट्स. फॉरेन गवर्नमेंट से जो पैसे लिए हैं, दैट इज एक्सटर्नल डेट. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी गवर्नमेंट्स को, इंटर गवर्नमेंट्स को पैसे देती है. दैट इज country to country also, and organizations also give money. या बाहर की जो प्राइवेट लेंडर्स है, और फ्रॉम फॉरेन प्राइवेट लेंडर्स ऑल्सो मनी इज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट्स. तो 3-4 सोर्सेज है एक्सटर्नल डेट के. एक तो फॉरेन का जो गवर्नमेंट है वो, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो, एंड फॉरेन प्राइवेट लेंडर्स. डोमेस्टिक डेट क्या होता है? तो दैट इज money owed to local or national lenders such as citizens, banks or domestic financial institutions. DII, domestic institutional investors या financial institutions. So these are the two different sources of public debt. External debt or external borrowing or from external sources, and domestic lenders. हमने यहाँ पे पढ़ा था डोमेस्टिक लेंडर्स, एक्सटर्नल क्रेडिटर्स और डोमेस्टिक लेंडर्स. फिस्कल डेफिसिट, अभी ये क्यों बोरोइंग्स किया है? तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ पब्लिक डेट, इज अ रिजल्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट. मतलब फाइनेंशियल डेफिसिट हुआ है, बजट में पैसे नहीं है तो बोरोइंग करना पड़ता है गवर्नमेंट को. बिकॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट्स द पब्लिक डेट इज रेज्ड, बोरोइंग्स आर डन, रिजॉर्टेड टू. So public debt is often the result of fiscal deficits which occur when a government's annual spending surpasses its revenues from taxes and other sources. जब टैक्स और दूसरे सोर्सेज से पैसे नहीं आते गवर्नमेंट को या कम पड़ते हैं, तो then they resort to public debt, that is raising money through public debt. Public debt के दो सोर्सेज क्या थे? एक्सटर्नल बोरिंग्स एंड इंटरनल, एक्सटर्नल क्रेडिटर्स एंड डोमेस्टिक लेंडर्स. Next, interest payments. Governments are required to pay interest on public debt. अभी पैसे लिए तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, विच इज रिकरिंग कॉस्ट, जो घड़ी घड़ी आते रहता है. द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द टर्म्स ऑफ द बोरोइंग. अभी जो इंटरेस्ट कितना भरना है उनको गवर्नमेंट को, तो वो होता है बेस्ड ऑन द बोरोइंग्स. गवर्नमेंट ने कितना डिक्लेयर किया कि वो इंटरेस्ट देगी साल का, तो वो हिसाब से उनको पे करना होता है. एग्जाम्पल, द इंटरेस्ट रेट एंड मैच्योरिटी पीरियड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैच्योरिटी पीरियड लंबा है, 10 साल के लिए बॉन्ड दिया है, 20 साल के लिए दिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है. जितना शॉर्ट टेन्योर रहता है, जितना शॉर्ट पीरियड रहता है, उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ता है. इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, बोथ पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट. अच्छा, पब्लिक डेट जब रेस करेगी, बोरोइंग्स जब बढ़ेगा, तो उनका खर्चे भी करेगी गवर्नमेंट. सो पब्लिक डेट कैन बी यूज टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सर्विसेज, या बूस्टिंग इकोनॉमिक और स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ रिसेशन. तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि अगर पब्लिक से पैसे उठाए तो उनको इंटरेस्ट तो देना पड़ता है, उनके आउटगोइंग्स बढ़ जाते हैं. बट एट द सेम टाइम अगर रिसेशन है, प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, तो वो एक इकोनॉमी को एक बूस्ट देता है. दूसरा है सोशल सर्विसेज, जैसे गरीब लोगों को प्रोटेक्शन देना, खाना देना, मुफ्त का खाना देना, या बहुत सारी चीजें जो सोशल सर्विसेज करते हैं गवर्नमेंट, तो वो सब बेनिफिट्स वो बोरोइंग से वो पूरा करते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए भी पैसे रेज करने होते हैं, रोड्स वगैरह, पोर्ट्स, तो ये सारी चीजें. इसके नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर एक्सेसिव पब्लिक डेट कैन लीड टू हायर इंटरेस्ट पेमेंट्स which may limit the government's ability to spend on other needs. अगर बहुत ज्यादा पब्लिक डेट, बोरोइंग्स बहुत ज्यादा कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट भी ज्यादा हो जाएगा, जिससे
दूसरी चीजों पे गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर पाएगी जो करना था उनको. It may also result in inflation, currency depreciation, and the possibility of a debt crisis if the government cannot meet its debt obligation. अगर बहुत ज्यादा बोरोइंग्स कर दिया गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि गवर्नमेंट मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग द मनी, तो पैसा ज्यादा आ रहा है मार्केट के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, सब चीज के भाव बढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. करेंसी डेप्रिसिएशन कैसे होगा? तो अगर एक्सेसिव मनी है इकोनॉमी में, तो करेंसी का डीवैल्यूएशन होता है. और जो डेट क्राइसिस तब आएगा जब गवर्नमेंट ने जो पैसे उठाए हैं उसका इंटरेस्ट भी नहीं भर पाएगी. एक पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे कंट्रीज में हुआ है. तो देन ऑल्सो दिस कैन लीड टू डेट ऑब्लिगेशन और डेट क्राइसिस. डेट टू जीडीपी रेशियो, a key measure of sustainability of public debt is the debt to GDP ratio. अभी हम लोग कैसे मालूम पड़ेगा हमको कि कितना पब्लिक डेट इनफ है या एक्सेसिव हो गया है? तो हमको वो देखेंगे हम लोग कि जीडीपी से कितना पैसा आ रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना, इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और मतलब उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है जीडीपी से टोटल कंट्री का, और उसके सामने डेट कितना उठा है. तो दैट इज डेट टू जीडीपी रेशियो. जनरली डेट टू जीडीपी रेशियो इज कंसिडर्ड 5%. बहुत ज्यादा होगा तो प्रॉब्लमेटिक है. तो ये की मेजर है डेट टू जीडीपी रेशियो, विच कंपेयर्स ए कंट्रीज टोटल डेट टू इट्स जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ए हाई रेशियो सजेस्ट ए कंट्री में स्ट्रगल टू रीपे इट्स डेट. अगर रेशियो बहुत हाई हो गया, 5%, 6%, फॉर एग्जाम्पल 100 is the GDP और उसके सामने 5 is the debt. 5 हम लोग बोल सकते हैं बिलियन, 5 ट्रिलियन, वॉट एवर. 5 ट्रिलियन तो नहीं होगा, पर 5 बिलियन बोल सकते हैं. और 100 बिलियन का जीडीपी, एक एग्जांपल की तरह, 100 बिलियन का जीडीपी नहीं होता है इंडिया में. अराउंड 2 या 3 ट्रिलियन का मेरे ख्याल से इकोनॉमी है इंडिया का, जो गवर्नमेंट ने कहा था 1-2 साल पहले कि वो 5 ट्रिलियन तक लेके जाना चाहती है मिनिमम. चाइना का तो काफी ऊपर है. फिर भी ये अगर ये 100/5 मीन्स 5%, सॉरी इंटू 100, 5% कहा ना मैंने, तो 5% मीन्स अपॉन 100, 5/100, तो ये 5% हो गया. 5% ऑफ द जीडीपी. तो ये फिर भी मेरे ख्याल से सस्टेनेबल है. इससे भी ऊपर गया हुआ है पहले. लेट्स कंटिन्यू. तो अगर हाई रेशियो हो गया तो वो एक इंडिकेटर है कि गवर्नमेंट स्ट्रगल करेगी या नहीं भर पाएगी, रीपे नहीं कर पाएगी डेट को. तो इसकी वजह से भी डेट क्राइसिस आ जाता है. डेट फाइनेंसिंग. गवर्नमेंट्स ऑफन यूज बॉन्ड्स सच एज ट्रेजरी बॉन्ड्स, बिल्स और नोट्स एज अ वे टू रेज फंड्स फॉर पब्लिक डेट. Bonds are sold to investors who are prepaid with interest over time. तो ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है जिससे गवर्नमेंट अपने बोरिंग्स रेज करती है, अपने पैसे रेज करती है मार्केट से, बोथ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, एक्सटर्नल क्रेडिटर्स एंड डोमेस्टिक लेंडर्स, दोनों से. तो ये तरीके हैं फॉर रेजिंग बोरिंग्स. Crowding out effect. High level of public debt can lead to a crowding out effect where government borrowing drives up interest rate, making it more expensive for private businesses to borrow money. अभी इससे क्या होता है, जब गवर्नमेंट पैसे लेने के लिए मार्केट में आती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाता है मनी का. अगर मनी का डिमांड बढ़ जाएगा तो मनी का शॉर्टेज होगा. तो जब शॉर्टेज है तो ऑफकोर्स एक साइकिल हो जाता है कि डिमांड बढ़ेगा उसका, तो बैंक्स विल चार्ज और या द लेंडर्स विल स्टार्ट चार्जिंग मोर इंटरेस्ट.
ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मांगेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बिजनेसेस अफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको अभी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से बोरो करना पड़ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स है, हम लोग एक बार रिवाइज करके जाते हैं। एक तो गवर्नमेंट का एक व्हाट आर द एस्पेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक डेट। तो ये तो सबसे पहले गवर्नमेंट का बोरोइंग है। इसमें दो टाइप के डेट्स आते हैं। ये कवर करता है फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। बोरोइंग्स क्यों करती है कोई भी गवर्नमेंट? तो उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है वो बोरोइंग्स पे। इससे इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे, बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव तब होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, डेवलपमेंट करना है, या इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना है, तो इसके लिए पॉजिटिव। बट नेगेटिव तब जो हो जाता है कि एक्सेसिव डेट ले लिया है, या उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, या करेंसी में डीवैल्यूएशन हो गया, तो उसकी वजह से भी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है। और उसको मेजर कैसे करेंगे कि कितना एक्सेसिव है कितना एक्सेसिव नहीं है? तो वो डेट टू जीडीपी रेशियो से करेंगे। और ये डेट फाइनेंसिंग पैसे कहाँ से उठाते हैं? तो ट्रेजरी बॉन्ड्स, बिल्स और नोट से। और इससे क्या होता है कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। इन शॉर्ट बेसिकली जो मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो बिजनेसेस है वो सफर करते हैं, प्राइवेट बिजनेसेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ अ गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स थ्रू टैक्सेस एंड अदर सोर्सेज, अगर टैक्सेस और दूसरे सोर्सेज से जो गवर्नमेंट को नॉर्मली पैसे आते हैं, अगर वो ज्यादा स्पेंड करते हैं उससे, तो डेफिसिट में है, फिस्कल डेफिसिट में है। फॉर एग्जाम्पल स्पेंडिंग ऑन सोशल सिक्योरिटी, टैरिफ्स एक्सेट्रा, इट में ये यहाँ से पैसे आते हैं, सोशल सिक्योरिटी, टैरिफ्स, माय बैड, ये स्पेंडिंग का बात है। इट में इश्यू बॉन्ड्स टू रेज फंड्स, तो वो बॉन्ड्स इश्यू कर सकते हैं पैसे रेज करने के लिए, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन पब्लिक डेट, जिसकी वजह से पब्लिक डेट बढ़ जाएगा। इफ द गवर्नमेंट इश्यूज बॉन्ड्स worth $10 billion and has an interest rate of 3% annually, it would pay $300 million in interest each year until the bond matures. अभी इसको हम लोग रुपीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉलर्स में भी रख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर एक्सटर्नल बोरिंग्स किया है तो वो डॉलर्स में ही करेगा कंट्री, इंडिया स्पेशली। इन सम, public means in total, public debt is a tool used by governments to fund projects and cover deficits. Mostly deficits cover करने के लिए यूज होता है, बट अदरवाइज प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए भी उनको अपने अपने बजट से नहीं निकालते पैसे, इंस्टेड बोरोइंग से उन लोग उसको कवर करते हैं। और बोरोइंग्स भी 20 साल 25 साल का होता है, जिसमें इंटरेस्ट रेट कम रहता है, जो मैनेजेबल होता है, but needs to be managed carefully to avoid excessive borrowing. ज़्यादा borrowings नहीं करना चाहिए, because that would lead to what? Fiscal debt crisis, and that could harm the economy in the long run. Now let's move on to the next question. Next question is, write different types of, or state different types of direct taxes. तो डायरेक्ट टैक्सेस जो होता है, these are the taxes that are directly imposed on individuals or organizations, especially individuals or organizations keyword है, and are paid directly to the government. Again ये भी paid directly to the government by the taxpayer. The taxes cannot be shifted to others. जिसका liability है उसको ही भरना है। मेरा इनकम टैक्स मेरे को ही भरना है, ऑर्गेनाइजेशंस का जो टैक्सेस है वो उनको ही भरना है। एंड आर लेविड ऑन इनकम, अभी ये भी, इसका भी मतलब बाद में मालूम पड़ेगा कि कैनॉट बी शिफ्टेड का मतलब है कि ये बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। प्रोड्यूसर जो है वो टैक्स कंज्यूमर से कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को देता है, तो बेसिकली शिफ्ट हो रहा है टैक्स लायबिलिटी। जबकि डायरेक्ट टैक्स में वो शिफ्ट नहीं होता है, टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स एंड आर लेविड ऑन। अभी ये टैक्सेस कहाँ पे एप्लीकेबल है? तो एप्लीकेबल है इनकम पे, इंडिविजुअल की इनकम पे, उसके वेल्थ पे, या उसके प्रॉपर्टी पे। इनकम टैक्स जो लोग भरते हैं तो उनको मालूम होगा कि प्रॉपर्टी टैक्स भी भरना पड़ता है, वेल्थ टैक्स भरना पड़ता है, इनकम टैक्स भरना पड़ता है। हियर आर द मेन टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फर्स्ट, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जो बिजनेस देती है वो,
वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, इनहेरिटेंस या इस्टेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, पोल्यूशन टैक्स, एनवायरमेंटल टैक्स। ये सारे टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स में है जो एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कॉर्पोरेट को या एक फर्म को देना होता है गवर्नमेंट को डायरेक्टली। और ये जो टैक्सेस है वो शिफ्ट नहीं होता है, लायबिलिटी ऑफ द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। और ये किसके ऊपर लगता है, तो ये इनकम, वेल्थ, प्रॉपर्टी। अभी हम लोग इनकम टैक्स देखते हैं पहले। विल लुक एट द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और अदर एंटिटीज। इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है, बिजनेस, सब लोग इनकम टैक्स भरते हैं, इंडिविजुअल्स भी भरता है, बिजनेस भी भरता है, और बाकी सारे एंटिटीज जैसे एनजीओज है या डिफरेंट बैंक्स है वगैरह वगैरह, सारे बाकी सारे एंटिटीज, सबको इनकम टैक्स भरना होता है। अगर इनकम जनरेट हुआ है टैक्स भरना पड़ेगा। इट इज यूजुअली प्रोग्रेसिव, मीनिंग द रेट इंक्रीजेस एज द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर इंक्रीजेस। तो अभी मेरे ख्याल से कुछ 5 या 7 लाख का बेसिक एग्जम्पशन है, 5 to 7 lakhs। तो अगर आप 5 से 7 लाख कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना होता है, मिनिमल भरना होता है। आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स रीच्ड अप टू 7 lakhs और नॉट। फिर इसके ऊपर फॉर एग्जांपल 7 to 10 है तो आपको 20% भरना होगा। मेरे टैक्स मुझे रेट्स नहीं मालूम है, आई एम नॉट श्योर, जस्ट चेक आउट, इट्स अवेलेबल ऑन गूगल। फिर 10 से 15 लाख होगा तो 30%, या 10 लाख से ऊपर होगा 10 lakhs एंड अबव, ग्रेटर देन 10 lakhs, तो फिर वो 30% है। प्लस उसके ऊपर एजुकेशनल सेस लगता है, दूसरे सेस लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं उसके ऊपर। बीच में कुछ कोविड का भी कुछ टैक्स लगाया था मुझे लगता है। तो ये सारे जो प्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब ग्रेजुअली एज द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर इंक्रीजेस द टैक्स रेट आल्सो इंक्रीजेस। इट इज अ की सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। ये मेन सोर्स है रेवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए, एंड इज बेस्ड ऑन एनुअल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। और ये जो इनकम टैक्स होता है वो एनुअल इनकम पे लगाया जाता है। अभी इसमें टीडीएस भी होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो एवरी एडवांस टैक्स भी होता है जिसमें एवरी क्वार्टर या एवरी मंथ भरना होता है। तो ये वो भी एक टैक्स के अंदर ही आ जाता है। अभी कॉर्पोरेट टैक्स में जाते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेशंस और बिजनेसेस। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो इंडिविजुअल पे नहीं लगता है, उनको होता है बिजनेसेस को देना पड़ता है कॉर्पोरेट टैक्स। इट अप्लाइज टू द नेट इनकम और प्रॉफिट मेड बाय ए कंपनी। ये भी इनकम टैक्स ही है बट ये कॉर्पोरेट पे लगता है, इसका टैक्स रेट ज्यादा है। इट अप्लाइज टू द नेट इनकम और प्रॉफिट मेड बाय कंपनी नेट इनकम जो होता है उसके ऊपर लगता है टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इसमें जो प्रॉफिट है उसमें से पहले टैक्सेस एक्सपेंसेस डिडक्ट किया जाता है, जैसे वेजेस, सारे एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा है उसका कॉस्ट क्या है वो भी कम किया जाता है। सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर कॉर्पोरेट्स को टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट, वेल्थ टैक्स। Wealth tax is levied on individuals or entities' net worth, which includes the total value of their assets, such as real estate, financial investments, and other property, minus any debt or liability. तो ये wealth tax है जो individuals पे लगते हैं या कोई भी entity भी, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उनके ऊपर, ये उनके टोटल नेटवर्थ पे लगता है, जिसके अंदर सारे एसेट्स इंक्लूडेड है। जैसे अगर कोई फ्लैट्स है, बंगलोज है, जमीन है, या कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या म्यूचुअल फंड्स में, तो वहाँ उसके ऊपर भी लगता है। और कुछ प्रॉपर्टीज है, उससे रेंट आ रहा है, उसमें से सारे जो डेट्स है, लोन्स वगैरह कुछ है तो वो माइनस करके, या लायबिलिटीज है तो वो माइनस करके जो होगा उसके ऊपर वेल्थ टैक्स लगेगा। आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि इसमें वेल्थ टैक्स इंडिया में है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर।
Some countries have wealth tax system that apply annually while others do not have this type of tax. ओके, सो वेल्थ टैक्स जो है वो एबॉलिश हो गया है 2015-16 में इंडिया के अंदर. सम कंट्रीज हैव वेल्थ टैक्स सिस्टम दैट अप्लाई एनुअली, पर हम लिख सकते हैं कि इट वाज वन ऑफ द ओल्ड सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. फिर प्रॉपर्टी टैक्स देखते हैं. प्रॉपर्टी टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी ओनर्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टी, लैंड, रियल एस्टेट और अदर टेंजिबल एसेट्स मींस जिसको छू सकते हैं, वी कैन टच. It is commonly levied by local governments or municipalities. So if you own a house, then you will have to pay property tax on that. The property tax is paid to the BMC in Maharashtra, Mumbai, and other places, other municipalities, they charge you property tax every year. It is based on some percentage of the total value of your flat or your land holding. तो वो लैंड, रियल इस्टेट और टेंजिबल एसेट्स, फ्लैट्स वगैरह, इट इज कॉमनली लेविड बाय लोकल गवर्नमेंट्स और म्यूनिसिपैलिटीज. टैक्स रेट कैन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इट्स लोकेशन. वो भी डिपेंड करता है. अगर आपका प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर अच्छे लोकेशन में है तो टैक्स रेट्स बढ़ जाएंगे. अगर आपका फ्लैट ऊपर के फ्लोर पे है, हायर एंड हायर फ्लोर, तो प्रॉपर्टी टैक्स और ज्यादा बढ़ता है. Capital gain tax. Capital gain tax is applied to the profit made from the sale of assets such as stocks, bonds, real estate और other investments. अभी कैपिटल गेन टैक्स तब भरना होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास शेयर्स हैं कोई कंपनी के, फॉर एग्जांपल L&T का, आपने 5 साल पहले बाय किया था और अगर आज आप सेल कर रहे हो उसको, उसमें प्रॉफिट आया है आपको 200%, 100%, फॉर एग्जांपल डबल हो गया. आपने 100 में लिया था, उसका 200 रुपीज हो गया, तो जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा. या आपने एक फ्लैट 50 लाख में बाय किया था, उसको 1 करोड़ में बेचा है, तो आपको 50 लाख के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा, जो अप्रोक्सीमेटली 20% का आता है. उसमें कुछ फर्दर डिडक्शंस होते हैं. वो डिडक्शन करने के बाद आपको इंडेक्सेशन बोलते हैं उसको. तो इंडेक्सेशन करने के बाद यू हैव टू pay to the government if you are not buying or reinvesting that money of that 50 lakhs जो 50 लाख में आपने खरीदा था, 50 लाख 1 करोड़ में बेचा. अगर आप वो 1 करोड़ में बेचने के बाद कोई घर नहीं खरीदते फॉर एग्जांपल, तो आपको वो 50 lakhs पे माइनस इंडेक्सेशन करने के बाद, आई एम नॉट गोइंग टू व्हाट इंडेक्सेशन इज, तो इंडेक्सेशन करने के बाद जो भी वैल्यू निकलता है, वो वैल्यू पे आपको गवर्नमेंट को फ्लैट 20% देना पड़ता है. अभी परसेंटेज में वेरी, बट 20% देना पड़ता है अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट को. अगर आपने उसकी वो 1 करोड़ में दूसरा घर खरीद लिया तो देन देयर इज नो कैपिटल गेन टैक्स. बट शेयर्स वगैरह पे लगते हैं, आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है एट द एंड ऑफ द ईयर. अभी फिलहाल आई थिंक बजट में कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया है ऑन सेल ऑफ शेयर्स. वो पहले कुछ लॉन्ग टर्म तो पहले 0 था, कुछ देना नहीं पड़ता था कैपिटल गेन, बट रिसेंट बजट्स में उसको बढ़ा के आई थिंक 12.5 या 15% कुछ कर दिया है. और जो शॉर्ट टर्म है, जो 1 साल के अंदर बेचा है स्टॉक्स, शेयर्स, तो उसके ऊपर परसेंटेज रेट ज्यादा है. आई थिंक 20% और 15% कुछ था. we'll have to cross check. This tax is often categorized as a type of income tax but is distinct in that it relates to the profit made from selling capital assets. तो ये इनकम टैक्स नहीं है, ये इनकम टैक्स के अंदर ही भरना पड़ता है, आता इंक्लूड होता है इनकम टैक्स में ही, बट इट इज नॉट एन इनकम टैक्स बिकॉज ये प्रॉफिट है या गेन है फ्रॉम स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स. Inheritance and estate tax. Inheritance or estate tax is levied on the value of an individual's estate upon their death. The tax is paid by the beneficiaries or heirs who inherit the property or assets. It applies to the total value of the estate, including real estate, cash and other assets, after accounting for any deductions or exemptions. Let me check if inheritance and estate tax is still applicable in India. Okay, ये तो 1953 में ही abolish कर दिया था, 1953 में ही निकाल दिया था inheritance estate tax. पहले था
स्टेट टैक्स अभी नहीं है, बट एक लिख सकते हैं दूसरे कंट्रीज में इट इज वन ऑफ द सोर्सेज, इट कुड बी वन ऑफ द सोर्सेज। गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स अभी भी एप्लीकेबल है। गिफ्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर विदाउट कंपेंसेशन। दैट इज गिफ्ट दिया है, इसमें कोई पैसे नहीं मिले हैं, तो उसके ऊपर गिफ्ट टैक्स भरना पड़ता है। आई थिंक इट इज 5% फॉर नॉन फैमिली मेंबर्स। फॉर एग्जांपल मैंने मेरा फ्लैट आप लोगों को दे दिया, तो यू आर एन आउट, आई डोंट नो, यू आर जस्ट अ फ्रेंड, सो आई गिव यू द माय फ्लैट, आई गिफ्ट इट टू यू विदाउट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम यू, तो फिर वो एक गिफ्ट हो गया, तो उसके ऊपर गिफ्ट टैक्स भरना पड़ता है। आई थिंक 5% का है करंटली, नॉट श्योर, चेक इट आउट। परसेंटेजेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वॉट द कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो और अगर फैमिली मेंबर है, अगर आप मेरे फैमिली मेंबर है, मेरे भाई है, तो भाई या बहन है, तो मुझे आई थिंक गिफ्ट टैक्स इज 1% और समथिंग, बहुत कम है उसमें। टैक्स इज यूजुअली पेड बाय द डोनर, अगर मैंने गिफ्ट किया तो मैं भरूंगा टैक्स को, और द गिवर, ऑल्दो इन सम जुरिस्डिक्शंस इट मे बी इम्पोज्ड ऑन द रिसिप्टेंट। कोई कोई जगह पे रिसिप्टेंट जिसको गिफ्ट मिला है वो भरेगा टैक्स, या जिसने गिफ्ट किया वो भी टैक्स भर सकता है। द टैक्स रेट ऑफन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट। टैक्स रेट कितना होगा वो गिफ्ट के वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, और रिलेशनशिप, जैसे मैंने बताया, अगर आप भाई है या बहन है तो वो गिफ्ट रेट कम हो जाएगा। अगर यू आर एन आउटसाइडर, मेरे फ्रेंड हो, तो आई कैन गिफ्ट इट टू यू, टैक्स रेट बढ़ जाएगा उसमें। पोल्यूशन टैक्स और एनवायरमेंटल टैक्स, आई थिंक ये टोटल वैल्यू ऑफ द इनकम टैक्स के ऊपर लगता है। लेट्स चेक। टोटल इनकम के ऊपर ये लगता है, जैसे एजुकेशनल सेस लगता है वैसे। पोल्यूशन टैक्स और एनवायरमेंटल टैक्स is levied on individuals or businesses based on the amount of pollution or environmental damage they cause. Individuals और businesses के ऊपर लगता है। This tax aims to encourage sustainable practices and reduce environmental harm. It is considered a form of direct tax because it is paid directly by the entity responsible for pollution. These types of direct taxes are essential tools for governments to raise revenue for public services and infrastructure, as well as to regulate certain economic behaviors. They differ from indirect taxes like sales tax or VAT. ये indirect taxes के example है, just in for this particular case, short में, which are passed on to the consumer and collected by the intermediaries. Alright, this completes this question. Second question. थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। गिव फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है? तो कैपिटल मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट, वेर स्टॉक मार्केट जैसे बोल सकते हो, या मार्केट जहां पे फाइनेंसेस कैन बी रेज्ड, वेर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर बॉट एंड सोल्ड। Securities such as stocks, bonds and other financial instruments are bought and sold. तो वो कैपिटल मार्केट में बेचा जाता है, खरीदा जाता है। क्या बेचा जाता है? स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। It plays a critical role in the economic growth of a country by facilitating the transfer of funds between savers and borrowers. अभी जो लोग सेविंग्स करते हैं और जिनको पैसे का जरूरत है, बोरोवर्स, तो ये इसमें व्हाट डज कैपिटल मार्केट डू? इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ फंड्स। जो लोग सेव कर रहे हैं उनका पैसा जिन लोग को खर्चा कर रहे हैं उनके पास जाएगा। तो ये कहां से होगा? तो ये कैपिटल मार्केट में से होगा। ये फाइनेंशियल मार्केट भी बोलते हैं उसको। द कैपिटल मार्केट हेल्प्स बिजनेसेस रेज फंड्स फॉर एक्सपेंशन। कैसे? तो बिजनेसेस आएंगे स्टॉक मार्केट में, पब्लिक को शेयर्स देंगे, पब्लिक जो सेविंग्स कर रही है वो पैसे से शेयर्स खरीदेंगे और वो पैसे कंपनीज को जाएंगी। तो एक तरह से कैपिटल मार्केट से बिजनेसेस आर रेजिंग फंड्स फॉर देयर एक्सपांशन एंड ग्रोथ एंड प्रोवाइड्स इन्वेस्टर्स विथ अपॉर्चुनिटीज टू अर्न रिटर्न्स। और इससे क्या होगा? जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोग अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं क्योंकि उनको शेयर्स मिले हैं कंपनी में, एंड शेयर्स कैन ग्रो, इट कैन बिकम इन 1 year, इट कैन डबल ऑल्सो।
तो इस तरह से इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो बेनिफिटेड, businesses are benefited because then they get money, they can raise funds for their expansion and growth, and borrowers can earn higher profits or returns. इसके फीचर्स देख लेते कैपिटल मार्केट के की फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट. इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. The capital market deals primarily with the long-term investments, usually more than 1 year. This distinguishes it from money markets. तो important है ये. कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है? तो कैपिटल मार्केट इज फॉर मोर देन 1 year एंड मनी मार्केट इज शॉर्ट टर्म, लेस देन 1 year. Okay, which focuses on short term securities. So money market focuses on short term securities, whereas capital market focuses on long term securities or long term investments more than 1 year. Instrument traded in capital market include stocks, equity shares, bonds, debentures and other long-term debt instruments. तो कैपिटल मार्केट के एग्जांपल्स क्या है जो इंस्ट्रूमेंट्स है कैपिटल मार्केट के जहां से फंड्स रेज कर सकते हैं? तो वो है स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड अदर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स. नोट्स वगैरह थे, पहले हमने देखा था, पढ़ा था नोट्स वगैरह, तो वो भी इंक्लूडेड है. प्रोमिसरी नोट्स, आई डोंट थिंक प्रोमिसरी नोट्स आर स्टिल वैलिड, बट बीच में कुछ बैन कर दिया था उसको. बट नोट्स, दूसरे बैंक नोट्स होते हैं, तो वो भी हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए. टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट किस तरह के होते हैं? तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स आर देयर. 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स आर देयर. तो फर्स्ट हमने देखा कि इट इज अ फीचर, वन ऑफ द फीचर इज इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. दूसरा है टाइप्स. टाइप्स में प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट इज वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इश्यूड. जब फर्स्ट टाइम कंपनी आती है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो दे कम इन द प्राइमरी मार्केट. उसमें आईपीओ से वो पैसे रेज करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से. इट अलाउज कंपनीज, गवर्नमेंट्स और अदर एंटिटीज टू रेज कैपिटल बाय इश्यूइंग न्यू स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स. तो इसमें नए स्टॉक्स इश्यू होते हैं, न्यू, फ्रेश, टू द इन्वेस्टर्स. और ये फर्स्ट टाइम के लिए, जब भी whenever the companies wants to raise funds, they'll come to the primary market and issue securities or shares in the IPO, initial public offering. इसका एक एग्जांपल IPO है और प्राइमरी मार्केट एक्टिविटी. अभी सेकेंडरी मार्केट देखते हैं. सेकेंडरी मार्केट इज वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड बिटवीन इन्वेस्टर्स. अभी जैसे ही कंपनी ने ऑफर कर दिया स्टॉक्स इन्वेस्टर्स को, अब वो अगर इन्वेस्टर को बेचना है तो वो कहाँ पे बेचेगा? तो वो सेकेंडरी मार्केट में बेचेगा. तो सेकेंडरी मार्केट इज वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, मतलब जो शेयर्स वगैरह है, वो बेचा जाता है, खरीदा जाता है बिटवीन द इन्वेस्टर्स. इट डज नॉट रेज न्यू कैपिटल. इससे नए कैपिटल रेज नहीं होता है. फॉर इश्यूइंग कंपनी, जो कंपनी ने इश्यू किए स्टॉक्स, उसको तो पैसे ऑलरेडी मिल गए. अभी जिसके पास वो शेयर्स है वो बेच सकता है, खरीद सकता है इन दिस सेकेंडरी मार्केट. और इससे वजह से क्या होता है? इसकी वजह से लिक्विडिटी आता है फॉर द इन्वेस्टर्स. मीन इन्वेस्टर्स कैन इजीली बाय एंड सेल दो शेयर्स इन द ओपन मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. बट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स हु विश टू ट्रेड प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटीज. अगर उनको खरीदना बेचना है, जो ऑलरेडी शेयर्स है, तो वो खरीद सकते हैं. और वो लिक्विडिटी मीन्स इजीली लिक्विड है, लाइक वाटर. इट कैन, यू कैन सेल एंड बाय इजीली इन द सेकेंडरी मार्केट. स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, NSE, BSE. These are different stock exchange जिसमें वो दोनों होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, जिससे you can buy and sell stocks and issue new shares. Companies can issue new shares in IPO. Long term financing. So दो फीचर्स थे. एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. कैपिटल मार्केट मीन्स इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ऑफ रेजिंग फंड्स. दूसरा है इट इज अ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट्स कैपिटल मार्केट में, तो प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट.
थर्ड देखते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. Capital markets enable businesses to secure long term financing for their projects, for their expansion, for their growth, or for capital expenditure. Next is liquidity. The capital market provides liquidity to investors by allowing them to buy and sell securities. So this is about the capital market. Now in the secondary market there is a lot of liquidity. That is what helps us to buy and sell securities. The secondary market ensures that investors can convert their investments into cash quickly and at fair market prices, enhancing the attractiveness of the capital market. So this is very easy to understand. Next is market participants. Key participants in the capital market include the issuers, that is the companies, governments, and investors who buy it, like individuals, institutions, or foreign investors. DII, that is domestic institutional investors, and FII, foreign institutional investors. Brokers and market makers. Regulatory bodies like the Securities and Exchange Commission (SEC) in the United States or the Securities and Exchange Board of India (SEBI) play a key role in overseeing and regulating the capital market activities to ensure transparency and fairness. So we have regulatory bodies like SEC and SEBI and participants like companies, governments who raise funds through the primary market, and investors like individuals, institutions, and foreign investors. So let's revise these 5 points key features of capital market. It's a long-term investment. Basically, more than 1 year investments are categorized as investments in capital market. Basically, whatever money is raised from capital market is for greater than 1 year. The capital market is further divided into primary market and secondary market. Primary market is where first time companies come to issue their shares in IPO. And secondary market is where the trading takes place, the buying and selling of the already issued shares. The secondary market provides liquidity to investors. In the examples of secondary market includes NYSE, Nasdaq, NEC, BSE, NSE, BSE. It is for long-term financing, as you already saw earlier. It's a long-term investment or long-term financing, both. Liquidity, it provides liquidity because this we can connect it with the secondary market, and the long term we can connect it with the first one. Market participants, we already saw who are the market participants and who are the regulatory bodies. Risk and return. Capital markets are generally associated with higher risk compared to money market due to volatility of stocks and bonds. There are chances that if one is invested in a capital market investments, chances of losing the entire capital is also very high, the entire principal amount, because these stocks fluctuate a lot. Just like there are high chances of losing, there are high chances of gaining also. However, they also offer the potential for higher returns, especially in the case of equity investments like stocks. Investors face the risk of losing part or all of their investments if the performance of the asset or the issuing company is poor. Alright, price discovery. This is risk and return. So now price and discovery. The capital market helps in price discovery, where the prices of securities, stocks, bonds are determined based on the supply and demand dynamics. So the price is set based on the demand and supply of the underlying stock, and that helps discover the price of that particular security. Regulation and supervision. Again, this will be connected with the upper point. Capital markets are highly regulated to protect investors, maintain fair trading practices, avoid manipulations, and ensure transparency. Regulatory bodies like
SEBI, SEC and others set rules and enforce compliance to maintain market integrity and investor confidence. Very important. Instruments traded. What type of instruments are traded? So equity shares, bonds, derivatives, mutual funds, and so on. So these are the type of instruments traded. Let's look at equity. It represents the ownership in a company, giving shareholders voting rights and potential dividends. Bonds and debentures. Debt instruments issued by companies or governments. Bonds and debentures are issued by government or companies, where the issuer promises to repay the principal with interest over time. Derivatives are financial contracts whose value is derived from the value of an underlying asset, such as stock, options, future contracts. This is what derivatives. We don't need to go into detail of the derivatives, but just understand that its value is derived from the value of an underlying asset, what that asset covers. Mutual funds. This investment vehicle pools money from multiple investors to invest in stocks, bonds, and other assets. Next, let's go to efficient allocation of resources. Capital market helps in efficient allocation of resources by directing savings into productive investments. Investors' funds are channeled into businesses that require capital for expansion, technological advancements, or infrastructure development, fostering economic growth. So this is efficient allocation of resources. Global reach. Capital markets are not restricted to a single country but have a global dimension. Many investors participate in international capital market, allowing companies and governments to access funds from a wider range of sources, both domestically and abroad. So companies can raise money from stock markets which are in different countries. Let's look at examples of capital market activities. A company may issue new shares in the primary market, this we already checked, to raise funds for expansion and growth. These shares are then traded in the secondary market on a stock exchange like NSE, BSE, where investors can buy and sell the shares. A government may issue bonds, debentures, or derivatives to raise funds for infrastructure projects. Investors can purchase these bonds, debentures, etc. in the primary market and then sell them in the secondary market if they wish to trade them before maturity. So those things can be sold also. In summary, the capital market is essential for raising long-term funds, providing investment opportunities, and promoting economic growth by connecting savers and borrowers in the economy. This completes this particular part of the question. The question was on capital markets. Features of capital market. Let's go into the next question. Define small scale industries. Small scale industries, SSIs, refers to businesses or manufacturing units that operate on a relatively small scale in terms of production capacity, how much they produce, their investment, how much they are investing in the business, and the number of employees or workforce or laborers. These industries typically produce goods and services that cater to local or niche markets and are categorized by limited capital investments, fewer employees, and lower level of technological sophistication compared to large scale industries. Of course, so they have less production capacity, less investments, and on a lower level and less workforce. Let's look at these key characteristics of the small scale industries. First, investment limits. Small scale industries usually have limited capital investment. This limit can vary by country, but in general, the small scale industries have a set threshold of capital investment which is much lower than that of large industries. For example, in some countries, small scale industries may have a cap, that is limit of investment up to a certain amount, like $1 million or less, for them to be classified as small scale. Let's check what is categorized in India as a small scale industry.
Alright, so we have the table here. Small scale industries as of 2020 is classified if they have an investment in plant and machinery equipment, that is technology, of more than 1 crore but not exceeding 10 crore. So less than 10 crore but more than 1 crore is considered as small enterprise or small scale industry, and their annual turnover should not be, it should be more than 5 crores but not exceeding 50 crores. So as far as plant machinery is considered, more than 1 crore, less than 10 crores. And total annual turnover means the total sales should be more than 5 crores, 5 times their machinery, and 5 times their not exceeding 50 crores also. Whereas medium scale industries, they start at 10 crores, that is their investments in plant and machinery should be 10 crores but not exceeding 50 crores, and their annual turnover should be more than 50 crores but not exceeding 250 crores. So this is what is the revised criteria for small and medium enterprises in India. Alright, let's look at the size of workforce. The number of employees in small scale industries is generally smaller than in large scale industries. The workforce may range from a few employees to a few hundred depending on the nature of the industry. As far as workforce is concerned, that is not a criteria as to how many employees should be there in the small scale industries, but normally it is less than the large scale, of course, and from few employees to few hundred employees on the nature of the industry. Local and niche market focus. Small scale industries often cater to local or regional markets. Important to understand that if I am a small scale industry, I'm an entrepreneur and I've set up a new small scale industry, then I'll basically cater to the local, and my focus will be on local and regional markets, and my products may be very specialized or customized to that local or regional market. This will allow them to serve niche markets with unique or low volume goods that may not be produced by large manufacturers. So I will try as a small scale entrepreneur to cater to the niche markets where the product, the produce, whatever I'm producing is unique, and the goods are not at a very high level of volume, it's a low level volume, and these kind of products are not produced by large manufacturers. Okay, flexibility and innovation. Okay, small scale industries tend to be more flexible and innovative, allowing them to quickly adapt to market changes and customer needs. They may be better able to experiment with new products or processes. So there is a flexibility and innovation. Labor intensive. SSIs are often labor intensive rather than capital intensive, meaning they rely more on human labor than on expensive machinery or automated processes. As a result, these industries often provide employment in local communities. Okay, next, technology. Small scale industries may not always have access to advanced or cutting edge technology. However, they often use simple or traditional techniques, and some may incorporate innovative technologies suited to their scale of operations. Capital structure. The capital structure of small scale industry is usually simpler, with most financing coming from personal savings, loans, or government assistance programs designed to support smaller enterprises. Product range. The product range of small scale industries can vary widely from consumer goods and handicrafts to food processing, textiles, and electronics. They may also include service based industries like repair shops, printing, and consulting. Government support. Many governments provide financial incentives and subsidies to small scale industries to encourage entrepreneurship, job creation, and economic development. This support may include tax benefits, loan at lower interest rates,
and training programs. Let's look at examples of small scale industries. Textile and garment production. Small businesses that manufacture clothing or textiles for local markets. Handicrafts and artisan products. Businesses that produce handmade goods, often sold in local markets or exported as cultural products. Food processing. Small food processing units like dairies, bakeries, and snack production. Repair and service businesses. Automobile repair shops, electronic repair services, or small scale printing presses. Farming and agricultural related industries. Small farms or agricultural processing units that produce local food products or services. Importance of small scale industries. It creates job, helps in economic growth, makes innovation and entrepreneurship, develops entrepreneurship, helps in decentralizing of economic power. Okay, SSIs play a significant role in providing employment opportunities, especially in rural and undeserved areas. Economic growth. They contribute to economic development, especially in developing nations, by fostering local production and reducing dependency on imports. Small scale industries encourage entrepreneurship and innovation, often serving as a breeding ground for new ideas and market niche. SSIs help in the decentralization of economic activities, reducing the concentration of industries in major cities or industrial hubs. In summary, small scale industries are vital to the economy due to their role in generating employment, stimulating innovation, and supporting local communities with goods and services. Relevance of economics to law. Next question. The relationship, this is an important question that can come in the paper. The relationship between economics and law is profound and mutually beneficial. Economics helps us understand the behavior of individuals, businesses, governments in response to laws and regulations, while law provides a framework within which economic activities are conducted. Economics helps us understand the behavior of individuals, businesses, and governments in response to laws and regulations, while laws provide the framework within which economic activities are conducted. This is a very important one. Together, economics and law work to regulate and guide markets, resolve disputes, and ensure justice. Let's look at why economics is relevant to law. 1. Economic analysis of legal issues. Economics provides tools to analyze legal issues and understand their impact on society. By applying economic principles such as cost benefit analysis, game theory, and market efficiency, we can better evaluate legal rules and policies. Example, in antitrust law, economics is used to assess whether a business practice harms competition or benefits consumers. Economic analysis helps determine whether monopolistic behavior leads to higher prices or reduced innovation. So basically, the monopolistic market is an economic principle, and governments can impose penalty or ban if they find that a company is misusing its dominant position in the market by creating a monopolistic market or reducing the supply of goods and services and thereby increasing the price of the goods and services. So, economics is directly helpful in determining appropriate laws to be implemented to control the behavior of individuals, governments, and organizations.
Law and economic behavior. Laws affect the incentives of individuals and businesses. Different kind of laws affect the incentives of individuals and businesses, which in turn influence their economic behavior. We'll look at the example. Understanding how individuals and firms respond to legal incentives is crucial for designing effective laws. Now, tax laws and regulations influence consumer spending. So the law affects the economic activity of the consumer in how much they spend. So if the government increases tax, if the law states that taxes are increased or more regulations are there, then the consumer spending will decrease, leading to downward economic growth. Investment decisions and business operations. So not only their spending habit will change, but the investment decisions will also change, where they are investing, and the business operations will also be affected. So all laws affect the economic behavior. Economic theory helps lawmakers understand the likely economic outcome of various tax policies. So taxes are determined based on economic theories or study of economics or economic activity of a country. Efficiency in lawmaking. Economic principles of efficiency are often applied in the creation and evaluation of legal rules. So there is an economic principle of efficiency. That is how resources are to be used in the most efficient manner, because resources are of scarce nature. The resources are limited. Wants are unlimited. Human wants are unlimited. So therefore, the resources have to be used most efficiently. And the same principle of economics is used while creating legal rules. A key goal in lawmaking is to achieve allocative efficiency, meaning resources are allocated in a way that maximizes societal welfare. Let's look at an example. In contract law, economic analysis helps ensure that legal rules facilitate mutually beneficial exchanges while minimizing transaction costs, thereby promoting more efficient markets. So in contract law, earlier we saw antitrust law, where monopolistic behavior or monopolistic market is created. In contract law, economic analysis, the analysis of economy, helps in drafting legal rules so that mutually beneficial exchanges can be created. So if laws are not there, then what is contract? Contract is nothing but exchange of some consideration, either goods or services, or some kind of agreement. Now, if rules are not there, if laws are not there to regulate that contract, then it will create disturbance in the economy, or it will create more harm in the economy, in the sense that the contracts will not be able to be implemented, and it will directly lead to reduction of businesses or business activity in the country. So these laws, they help in minimizing the transaction cost, thereby promoting more efficient markets. Next is property rights. How does law and economics work in this? Economics and law are both concerned with property rights. Clearly well-defined property rights are essential for economic transactions. Now, when you sell property or buy property, there is an economic transaction, and for that we also need laws, and the laws should be well defined, as they provide incentives for investments and resource allocation. For example, in intellectual property law, economic theory helps assess the balance between providing incentives for innovation by granting patents and ensuring that knowledge remains accessible to others in the long term.
So now when somebody comes out with a patent, okay, they have come out for example a different kind of product, an amazing new product. Now they need law or some kind of patent law or intellectual property law so that nobody else is able to copy it and they are able to produce it and earn from it. Okay, so that technology can be technology can be used by many people. So that is where law also comes in terms of intellectual property law. Fifth is market regulation and legal framework. Economic theory informs the regulation of markets, ensuring they operate efficiently and fairly. Economic theory informs the regulation of markets. So markets are regulated based on the economic theory of demand supply, ensuring they operate efficiently and fairly. Government's intervention, such as price control, when government intervenes, that is through measures of price control. So they will restrict exports, imports, or they will set a predetermined price for a particular product, like an MRP and all of that. Subsidies, if the government gives subsidies, or anti-monopoly law is often based on economic analysis of market behavior and outcome. So whenever a government feels that there is too much monopoly of one particular company, they may come out with laws, and they can also take measures like price control or give subsidies or create anti-monopoly laws. Example, environmental law relies heavily on economics to design policies. So environmental laws rely heavily on economics to design policies that limit pollution or manage natural resources in a way that reflects the true cost and benefits to society. Alright, so now how does economics and environmental law comes in? Here, because we are studying about how economics is relevant in law. Now, when companies are engaged in economic activities, there is a lot of pollution created by industries. So, to control them, laws are created, and those are environmental laws where fines are imposed, penalties are imposed on companies which damage the environment, which pollute the environment, or even taxes on management of natural resources. Behavioral economics and law. Behavioral economics is a branch of economics that studies how psychological factors influence decision making, and it is becoming increasingly relevant to legal theory. It provides insights into how individuals may not always act in their own best economic interest, and how legal rules can be designed to account for such behavior. Now, we see that many laws are created to control the behavior of individuals and organizations because they can misuse those limited resources. For example, in consumer protection law, behavioral economics helps explain why consumers might make decisions that are not in their best financial interest, that is, over indebtedness, which can inform policies such as stricter regulation of credit lending. So, this is also very important to control the economic behavior. Now, consumers, if they get loans very easily, if they get credit easily, then they will borrow it, they will take it. But now government comes out with laws to restrict borrowing, and the credit should be given only to credit worthiness borrowers who have good credit scores. Dispute resolution. Economic principles are often applied in dispute resolution processes. Now, when there is economic activity, buying, selling happening in an economy, there are of course disputes in that. The contracts can be disputed. Now, when that happens, there are laws for that. So, lawsuits and legal disputes can be analyzed in terms of the costs and benefits of settling versus litigating. Economic models of bargaining and negotiation
help in understanding and predicting the outcomes of legal conflicts. In tort law, the economic principle of negligence considers whether the defendant's actions were cost effective in relation to the potential harm caused, helping to determine liability. Now, in the tort law, there is a if the whenever there is an economic transaction happening and there is some kind of negligence in that, the one of the parties can claim damages for that negligence, and for that there are laws like tort law, which helps in determining the liabilities of the parties engaged in the involved in the contract. Contract law. Contract law is heavily influenced by economic theory as it governs the exchange of goods and services between parties. Economics helps in designing contracts that minimize transaction costs and align incentives between parties. For example, in business law, contracts may include clauses that are meant to minimize risks, such as warranties, limited liability, liability limits, and conditions for breach of contract. Economic analysis helps shape these contract terms for optimal outcomes. Ninth, incentives and penalties. The legal system relies on incentives, reward for compliance, and penalties, punishment for non-compliance, to influence behavior. Economic theory helps lawmakers understand how to structure laws in ways that motivate desirable behaviors and deter harmful ones. For example, in criminal law, economic theory helps evaluate the effectiveness of fines, imprisonment, or restitution in determining crime and promoting social order. Social justice and economics. Economics also plays a role in understanding the impact of laws on wealth distribution and social justice. Economic analysis can help assess how legal rules impact poverty, inequality, and social welfare. All of these are economic principles, or they are studied in economics, and for that government or laws are created by governments to control or eradicate poverty or reduce poverty, inequality, and enhance social welfare. For that laws are made, guiding policy makers to create fair laws. Example, laws related to welfare, healthcare, or taxation are designed with goal of redistributing wealth or providing a safety net for vulnerable population. Economic analysis is crucial to ensure these laws achieve their intended social outcomes. International trade and economic laws. International economic law, which includes trade agreements and treaties, draws heavily on economic theory to determine the rules that govern cross-border trade and investment. See, the laws come in only because of economic activity in the country. When there is any kind of economic activity, because countries run on economic activities, and to control that, laws are implemented so that the economic activity can run smoothly without any hindrances. Economic analysis helps assess the potential impact of trade policies such as tariffs, quotas, and trade liberalization agreements. Let's look at an example. In World Trade Organization disputes, economic reasoning helps evaluate whether trade barriers or restrictions imposed by one country harm another, guiding legal decisions in favor of fair trade. Now let's conclude. The relevance of economics to law is vast and multifaceted. By providing insights into human behavior, resource allocation, and market functioning, and the effects of legal rules, economics aids in the creation of more effective, efficient, and equitable laws.
A close relationship between economics and law helps ensure that legal frameworks are aligned with the practical realities of how individuals and businesses operate within the economy. So with this, I close this video here. Thank you very much for listening. I hope this has helped you. Do consider sharing this link with your friends and WhatsApp college groups. Take care. Bye bye.